Good morning, student. So, before starting today's new part, that is Ostwald dilution law, we will see some basic terms that is related to this Ostwald dilution law. And yesterday we have completed the theory of acids and base, Arrhenius theory, Lowry-Bronsted theory, and Lewis theory. In that Lowry-Bronsted theory, we will revise all that. First, Arrhenius theory. According to Arrhenius theory, acids are the substance which gives H plus ion when dissolved in water. Arrhenius base are the substance which gives hydroxyl ion when dissolved in water. Then Lowry-Bronsted theory, Lowry-Bronsted acids, they are the substance which donate proton, H plus ion, they are called as acid, and base are the substance which accept a proton, they are called as base. Lewis theory, Lewis acids are the substance which accept pair of electron, and Lewis base, they are the substance which donate lone pair of electron. उसमें जो हमने सेकंड देखा था, that is Lowry-Bronsted theory, in that one term remains, so we'll see today. That term is amphoteric nature. So amphoteric substance, you have heard this amphoteric. Amphoteric means substance which act as both acid as well as base. That substance is called as amphoteric substance. And here we have to study amphoteric nature of water. So today's first part, amphoteric nature of water, means we have to show that water acts as both acid as well as base. So when water, H2O, when it reacts with ammonia, and an equilibrium is formed. When water reacts with ammonia, here we will use the concept of Lowry-Bronsted theory. So here water, it donates its proton to ammonia. So water donate proton to ammonia, ammonia become NH4 positive and water become OH negative. Now since water donate proton to ammonia, so water become acid according to Lowry-Bronsted theory. In the next reaction, when same water, it react with HCl. So here water will accept proton from HCl. Here it accept proton, it form H3O positive, H2O become H3O positive and HCl becomes Cl negative. So here water accept the proton, therefore according to Lowry-Bronsted theory, it become base. So water, it act as acid, it act as base. Therefore water is amphoteric substance. So this is the heading, amphoteric nature of water, and this is explanation. Next definition regarding this Ostwald dilution law. Next definition is, the important definition is degree of dissociation. Degree of dissociation denoted by alpha. This we have already seen in the previous topic, that is in solution, in the last part, that is Wendt of factor I. We have seen this in that degree of dissociation, the relation between Wendt of factor I and degree of dissociation alpha. What is this degree of dissociation? It is the ratio of number of moles of electrolyte that dissociate and divided by, it is the total number of moles that dissolve. So suppose we dissolved some electrolyte in water, then what happens? That electrolyte, it dissociate in water. That number of mole dissociate divided by total number of mole dissolve. It is called as alpha degree of dissociation. इसकी definition क्या है? It is the ratio. Ratio आ रहा था, उसको बोलते हैं fraction. The fraction of number of mole of electrolyte that dissociate at equilibrium. It is called as degree of dissociation. जब हम फ्रैक्शन बोलते हैं तो डिवाइड नहीं बोलेंगे हम, अदरवाइज डेफिनेशन ऐसी भी है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोशिएट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसॉल्व. इट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोशिएशन. और फ्रैक्शन ऑफ, हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे फ्रैक्शन वाली, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोशिएट एट इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा. आज हम इसको बहुत यूज करेंगे अल्फा. सेकेंड टर्म, it is dissociation constant, denoted by, constant is always denoted by K. Dissociation constant. What is this dissociation constant? For this we will consider a simple derivation.
So consider a weak electrolyte. Yesterday we have seen that there are two types of electrolytes, strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolyte किसे कहते हैं? The electrolyte which dissociate completely in water. And weak electrolyte, the electrolyte which dissociate partially, which remain partly dissociated and partly undissociated. उसे कहते हैं weak electrolyte. So consider a weak electrolyte Ba. Ba is a weak electrolyte. It dissolve in water and it dissociate partially like this. So Ba, it form equilibrium, it dissociate to form cation B positive and anion A negative. This reaction is called as equilibrium equation. Now to this equilibrium equation we will apply law of mass action. इसको हम एक theory apply करेंगे mass action की. उस theory को कहते हैं हम law of mass action. So apply law of mass action to this equilibrium equation. It becomes K is equal to this one. First the product. It is a concentration of B positive multiplied by concentration of A negative and divided by concentration of Ba, that is electrolyte. ये जो हमने अप्लाई किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. और इसमें जो हमको K ऑब्टेन होता है, दिस K इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट जो है, स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट, इसे कहते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन. तो आप पढ़ेंगे इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ए. दिस इज कॉल्ड एज के. के इज डिसोसिएशन कांस्टेंट. सो इट्स डेफिनेशन. इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? सो व्हाट इज के? इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसके लिए? फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. दिस इज इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन का. So equilibrium constant K for dissociation equilibrium of weak electrolyte, it is called as dissociation constant K. फिर से एक बार डेफिनेशन देख लीजिए. What is dissociation constant K? Since it is K, इसको हम बोलेंगे डेफिनेशन में it is a equilibrium constant. ये एक equilibrium का constant है. Equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak electrolyte, it is called as dissociation constant K. And this dissociation constant K, it is for acid, it is for base and it is for weak electrolyte. Simply हम उसको K नहीं लिखेंगे, बाद में हम उसको derive कर देंगे, बाद में उसको divide कर देंगे. One time we will call it Ka, second time we will call it Kb, where A stand for weak acid, B stand for weak base. So Ka, इसके दो लॉन्ग फॉर्म है. Ka का लॉन्ग फॉर्म A for acid, K for dissociation constant, acid dissociation constant. Kb, base dissociation constant. So these are the two terms that we will use today. Okay, now I am going to explain you this Oswald dilution law. See this, what is this law? Oswald dilution law. So the law, we will see the statement of this law afterwards. First we will derive this law. So how does it? So first again consider 1 mole of weak electrolyte Ba. What is Ba? Ba is the weak electrolyte. सिंबल याद कर लो, ये आगे हम यूज करते रहेंगे. तो Ba को हम weak electrolyte कह रहे हैं. इसका 1 mole कंसीडर करेंगे and it is dissolved in VDM³ of solution. Consider 1 mole of electrolyte Ba which is dissolved in VDM³ of solution. Volume of the solution is VDM³. Then number of moles that when they dissolve, they undergo dissociation. This Ba, it is a 1 mole of Ba, it undergoes dissociation, it forms B positive and A negative. B positive cation and A negative anion are formed. So initial mole स्टार्टिंग में हमने कितना लिया? इट इज 1 मोल ऑफ Ba. और स्टार्टिंग में हमने उसको वाटर में डिसॉल्व नहीं किया. बिफोर डिसॉल्विंग इन वाटर, दिस मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B पॉजिटिव इज 0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A नेगेटिव इज 0. अभी हमने ये Ba को सपोज करो कि वाटर में नहीं डाला, सॉल्यूशन में नहीं डाला, तो यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन 0 रहेगा इनिशियली. नाउ वी विल dissolve that in water. अब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे. सो इट अंडरगो इक्विलिब्रियम. सो सेकंड कांसेप्ट इज मोल at equilibrium.
So at equilibrium, out of one mole of Ba, अल्फा मोल विल डिसोशिएट, उसमें से अल्फा मोल डिसोशिएट हो जाएगा, तो वो अल्फा मोल बी पॉजिटिव बनेगा. नंबर ऑफ मोल ऑफ बी पॉजिटिव फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इज अल्फा एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ए नेगेटिव फॉर्म एट इक्विलिब्रियम इट इज आल्सो अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba दैट रिमेन्स, कितना रह गया Ba, इट इज 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा. So initial mole of Ba is 1. At equilibrium, out of that 1 mole, alpha mole dissociate. So remaining is 1 minus alpha. Mole at equilibrium 1 minus alpha. And concentration of mole of B positive is alpha and mole of A negative is also alpha. This is mole. Now when we will divide this, ये mole जो है number of mole, when we will divide this with volume, इसको हम volume से divide करेंगे. 1 minus alpha upon V, alpha upon V, alpha upon V. So when number of moles is divided by volume, it becomes a new term and it is called as concentration. C. Concentration is equal to 1 upon V. ये एक रिलेशन होता है concentration और volume में. So concentration और volume inversely proportional होता है. तो since ये हमने 1 upon V लिया, means ये volume convert हो जाएगा concentration में. So next term is concentration at equilibrium. This is the final. तीन टर्म है, पहला है इनिशियल मोल, सेकंड मोल एट इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. सो 1 minus alpha upon V, this is the concentration of Ba. Alpha upon V, this is the concentration of B positive, and alpha upon V, this is also the concentration of A negative. This is the concept जो हमने यहाँ पे suppose किया है. Now we will use law of mass action to this Ba. So according to law of mass action, so according to law of mass action, this applying law of mass action to this dissociation equilibrium, इसको हम law of mass action apply करेंगे. So we have here we get K is equal to concentration of B positive, this product. This summation will become multiplication concentration of A negative and divided by this reactant concentration of Ba. इसे कहते हैं हम law of mass action. K is equal to concentration of B positive multiplied by concentration of A negative upon concentration of Ba. Now putting the value of this concentration of B, concentration of A, concentration of Ba, ये तीनों वैल्यू यहाँ हमें मिलेंगे. Concentration at equilibrium जैसे ये है concentration at equilibrium, ये किसका है, Ba का 1 minus alpha upon B. Concentration of B plus का कितना है, alpha upon B, और A negative को alpha upon B. यहाँ पुट करेंगे हम. K is equal to B plus पे पुट करेंगे हम, it is alpha upon B multiply by A negative alpha upon B. दोनों को alpha upon B और concentration of Ba उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 minus alpha upon B. It is 1 minus alpha upon V. इसको सॉल्व करेंगे हम. So it becomes this K. K is equal to this V and V cancel. Alpha multiplied by alpha, it is alpha square. At denominator this is 1 minus alpha, so 1 minus alpha and this is V. 1 minus alpha into V. K is equal to alpha square upon 1 minus alpha into V. Now what is alpha? It is degree of dissociation, and for weak electrolyte Ba हम weak electrolyte ले रहे हैं. ये पूरा लॉ जो रहेगा ये weak के लिए रहेगा, strong electrolyte नहीं. और weak electrolyte का dissociation बहुत कम होता है, इसलिए alpha is very small. So 1 minus alpha is also very small. अगर आप 1 में से एक स्मॉल वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी, इसलिए हम उसे निगलेक्ट कर देंगे. 1 minus alpha is nearly equal to 1. उसको हम 1 ले लेंगे, स्मॉल हो जाएंगी बहुत वैल्यू, so it is neglected. So K is equal to, it becomes alpha square upon V. Because this 1 minus alpha, it is nearly equal to 1. 1 minus alpha is nearly equal to 1 because alpha is very small. So K is equal to alpha square upon V, और इसको सेकेंड इसमें लिखेंगे, it is equal to alpha square into C. Alpha square into C.
K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बी ऐसे आ गया, और उसको फिर हमने 1 अपॉन बी को हम चेंज कर देंगे, उसको हम C लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन. सो राइट अगेन दिस. सो K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, और K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, where this 1 minus alpha, it is nearly equal to 1. So here we'll cross multiply this, where alpha goes here. Alpha square is equal to K into V, or alpha square is equal to K upon C. Finally, this alpha is equal to under root K into V, or alpha is equal to under root K upon C. And then finally, if we remove this sign of equality and K, अगर आप ये इक्वलिटी साइन और K हटा देंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा. सो दिस इज अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V, और अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 upon C. This becomes the statement of Ostwald dilution law. What is alpha? It is degree of dissociation. V, it is called as volume of solution. Degree of dissociation is directly proportional to square root of volume, or degree of dissociation is inversely proportional to square root of concentration of solution. This is called as Ostwald dilution law. इसको हम Ostwald dilution law का स्टेटमेंट कहते हैं. So this is all about Ostwald dilution law. अभी हमको ये Ostwald dilution law 2 बार और देखना है. इसको हम 2 times और करेंगे, क्योंकि ये हो गया सिर्फ अभी Ba के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. अब हमको वीक एसिड के लिए करना है, फिर वीक बेस के लिए करना है. तो इसको 1-2 बार और मैं रिवाइज कर रहा हूं, अच्छी तरह समझ लें. फर्स्ट द क्वेश्चन विल बी, क्वेश्चन क्या रहेगा? एक्सप्लेन Ostwald डाइल्यूशन लॉ फॉर, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये क्वेश्चन हो जाएगा Ostwald डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब हम इसको चेंज करते हैं, यही क्वेश्चन फिर से आएगा, एक्सप्लेन Ostwald डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, और यही स्टेप हमको रिवाइज करना है. इसलिए आप सेकेंड टाइम इसको कंसीडर कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लेना सेकेंड टाइम कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं. सो क्वेश्चन विल बी दिस रिमेंस सेम. एक्सप्लेन Ostwald डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड. सी एग्जाम में बराबर करने का, वीक एसिड बोला तो एसिड का ही डिराइव करने का, बेस बोला तो वीक बेस का डिराइव करने का. सो फिर हम स्टार्ट करते हैं. कंसीडर अ वीक एसिड HA. एसिड को डिनोट करेंगे हम HA से, इलेक्ट्रोलाइट को डिनोट किया था हमने Ba से. कंसीडर अ वीक एसिड HA and its 1 mole is dissolved in VDM cube of solution. इसका 1 मोल को हम VDM cube of solution में डिसॉल्व करेंगे. Now since it is a weak acid, it dissociate partially and it form an equilibrium. So this HA, it dissociate partially, it form H positive and A negative. Then applying to this, that consider initial mole. Initial mole of HA, it is 1 mole of, and at initially this H plus and A negative, they are 0, they does not present there, वो वहां है नहीं, इसलिए वो 0 आएगा. Now mole at equilibrium. Now at equilibrium, out of 1 mole, alpha mole will dissociate, so that alpha will form H plus ion and alpha also form A negative ion, and the remaining number of mole will be 1 minus alpha. स्टार्टिंग में आपने 1 मोल एसिड दिया था HA, उसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसमें से अल्फा मोल डिसोशिएट हो गया, तो रिमेनिंग रहेगा 1 माइनस अल्फा. और जो अल्फा मोल डिसोशिएट हो गया वो क्या बन गया? इट बिकम्स H plus ion cation and A negative ion anion. So mole at equilibrium become 1 minus alpha, and finally when they are divided by volume, it become concentration at equilibrium. So 1 minus alpha upon V, this is alpha upon V, this is alpha upon V. This is concentration at equilibrium. हमको यही चाहिए था, concentration at equilibrium. Now again consider this. इसको कहते हैं हम, it is called as dissociation equilibrium. इसको हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन.
So therefore now Ka is equal to Ka, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, concentration of H positive multiply by concentration of A negative divided by concentration of HA. This is Ka, that is acid dissociation constant, या फिर हम कह सकते हैं इसको dissociation constant of weak acid. दो नाम है इसके, acid dissociation constant और dissociation constant of weak acid. It is equal to H positive into A negative upon concentration of HA. अब ये तीनों का concentration हम यहां से पुट कर देंगे this. So Ka is equal to concentration of HA is alpha upon V multiply by concentration of A negative, it is also alpha upon V, and divided by concentration of HA. HA का concentration है 1 minus alpha upon V. So 1 minus alpha upon V. अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे ही किया था. नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? This one volume cancel. Upper part it has alpha multiplied by alpha square. And below it will remain 1 minus alpha as it is, and this volume comes down, it is 1 minus alpha into V. Again 1 minus alpha is nearly equal to 1. Since alpha is very small, so 1 minus alpha is nearly equal to 1, it is neglected. So finally it becomes Ka is equal to alpha square upon V. और इसको आप चेंज करेंगे, Ka is equal to alpha square into C. Because 1 upon V, that is inverse of volume, it is equal to concentration. Then alpha square is equal to Ka multiplied by V. V, not C, V. This, or alpha square is equal to Ka upon C. ये अल्फा ये रहेगा अल्फा स्क्वायर Ka multiplied by V हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर वही रहेगा K upon C हो जाएगा. So finally, therefore alpha is equal to under root Ka multiplied by V, और alpha is equal to under root Ka upon C. और जो स्टेटमेंट बनेगा ये हम इक्वल टू की साइन हटा देंगे. सो अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, और अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square root or inversely proportional to square root of concentration. Directly proportional to square root of volume and inversely proportional to square root of concentration. This is called as Ostwald dilution law for weak acid. So ये same ये है weak acid का, ऐसे हमने पहले देखा है weak electrolyte. एक बार और देख लेते हैं हम same Ostwald dilution law for weak base. इसका स्टेटमेंट क्या है? Degree of dissociation of weak acid is directly proportional to square root of volume, or it is inversely proportional to square root of concentration. This is called as Ostwald dilution law. एक तो हमारी यहाँ पे dilution, इसको dilution क्यों बोल रहे हैं? Dilution is the second name for volume. Volume, अगर आप किसी solution का volume बढ़ाते हैं मतलब आप उसका dilution बढ़ा रहे हैं. इसमें volume आ रहा है तो volume means dilution. अगेन एक बार और देख लेते हैं same. So final part, that is Ostwald dilution law for weak base. Third time is Ostwald dilution law for weak base. So start वैसे करेंगे. Consider a weak base, that is a base BOH. यहां आपको याद आता है अरेनियस थियरी. HA कहा था, एसिड को हमने HA कहा था क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है. अकॉर्डिंग टू अरेनियस थियरी, एसिड्स आर द हाइड्रोजन कंपाउंड व्हिच गिव्स H+ ion when dissolving water. Base आर द हाइड्रोक्सिल कंपाउंड व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन when dissolving water. तो बेस में OH जरूरी है और बेस के लिए B लिख रहे हैं हम. सो एक हम वीक बेस लेंगे BOH, और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने लेंगे हम? 1 मोल. कंसीडर 1 मोल ऑफ वीक बेस BOH which dissolved in VDM cube of solution. Solution जो रहेगा उसका dilution हम VDM cube लेंगे. Then initially then it dissociate this BOH. BOH it dissociate, it form B positive and OH negative. इसे कहते हैं हम dissociation equilibrium. Now initial number of mole.
initial number of moles that we have taken BOH, its number of moles is 1. Initially, before dissolving in water, before dissociation, its the concentration, the number of moles of B positive is 0 and number of moles of OH negative is also 0. So initial mole 1 0 0. Now when they dissolve in water, they form equilibrium. So mole at equilibrium, it becomes 1 minus alpha, alpha, alpha. आप ये याद ही कर लो, it is 1 0 0, 1 minus alpha, 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 और finally इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, that is the concentration at equilibrium, 1 minus alpha upon V, alpha upon V, alpha upon V. So this is concentration at equilibrium. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इतना सब किया. Now applying law of mass action to this dissociation equilibrium. इस dissociation equilibrium को law of mass action apply करेंगे. This time we get Kb. Kb, that is the base dissociation constant. Dissociation constant of weak base, it is equal to first concentration of B positive multiply by concentration of OH negative and divided by concentration of BOH. इसे कहते हैं हम law of mass action. Now putting this value, concentration, तीनों का concentration put करेंगे. So Kb is equal to concentration of B positive, this is B positive, इसका concentration है alpha upon B. Concentration of OH negative, इसका concentration भी है alpha upon B. और concentration of BOH, it is 1 minus alpha upon V. This V cancel, it becomes, it is equal to alpha square. नीचे रहेगा 1 minus alpha और V नीचे आ जाएगा. So Kb is equal to alpha square into 1 minus alpha into V. Next step क्या होती है? This alpha, that is degree of dissociation, it is very small, it dissociates partially, therefore 1 minus alpha is nearly equal to 1 and therefore is neglected. उसको हम neglect कर देंगे. So Kb is equal to, it is alpha square upon V. Only V. 1 minus alpha, it is neglected, or it is converted into concentration. Kb is equal to alpha square into C. Rearranging it, it is alpha square is equal to Kb multiply by V, or alpha square is equal to Kb upon C. और finally square root ले लेंगे इसका. So alpha is equal to square root of Kb into V, or alpha is equal to square root of Kb upon C. और अगर हम ये equal to और Kb हटा देते हैं तो यहाँ पे proportionality की साइन आती है. This is alpha, that is degree of dissociation. It is directly proportional to square root of volume. It is directly proportional to square root of dilution. Or same alpha, it is inversely proportional to square root of concentration. This is called as Ostwald dilution law for weak base. Law तीनों के लिए एक ही रहेगा. Ostwald dilution law का जो स्टेटमेंट है वो weak electrolyte, weak acid और weak base तीनों के लिए सेम ही रहेगा. सिर्फ यहाँ पे Kb आ जाएगा, वहाँ K आएगा, और Ba जो लिया था weak electrolyte वहां सिर्फ K आएगा. So finally Ostwald dilution law का statement, Ostwald dilution law for weak base is the alpha degree of dissociation of weak base, it's directly proportional to square root of volume, or degree of dissociation of weak base is inversely proportional to square root of concentration. This is Ostwald dilution law. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 5 स्टार वाला कॉन्सेप्ट है ये, and it will comes for 2 marks. 2 मार्क्स के लिए इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एस्पेन ऑस्फोर्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस. तो आज एक कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया. कल हमने कॉन्सेप्ट फिनिश किया था थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, अरेनिस थ्योरी, लॉरी-ब्रॉसिक थ्योरी, लेविस थ्योरी. आज एक कॉन्सेप्ट फिनिश हो ऑस्फोर्ड डाइल्यूशन लॉ. नेक्स्ट पीरियड में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ओके, हैव ए गुड डे.